देखो डबल रिफ्रैक्शन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अनिसोट्रोपिक मिनरल सब अनिसोट्रोपिक मिनरल डबल रिफ्रैक्शन दिखाते तो लाइट एंटर करे कौन से अनिसोट्रोपिक मिनरल को दीटा रे को स्प्लिट हो जाए दीटा रे को स्प्लिट हो जाए अनिसोट्रोपिक मिनरल अच्छी लाइट एंटर करवा भितर स्प्लिट्स इनटू टू रेज दीटा रे को स्प्लिट हो देख ये लाइट मोर मल्टी डायरेक्शन में वाइब्रेट करथुला कहना लाइटा हूँ कौन ओमनी वाइब्रेशनल सब डायरेक्शन में वाइब्रेट कर से एंटर कला इट विल स्प्लिट्स इनटू टू रे दीटा रे को स्प्लिट हो एंड ओनली टू वाइब्रेशन डायरेक्शन विल रिमेन ऑल अदर विल अब्जॉर्ब सो अनिसोट्रोपिक मिनरल थ्रू रे ट्रैवल करछि तो सेते लाइटा कौन होछि दीटा डायरेक्शन ही वाइब्रेट होछि इट हैज ओनली टू डायरेक्शन टू वाइब्रेशनल डायरेक्शन तो तले कौन सी अनिसोट्रोपिक मिनरल भितर तले लाइट रे एंटर करिवो इट विल स्प्लिट्स इनटू टू रेज दीटा रे को स्प्लिट कर जाए दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एज डबल रिफ्रैक्शन डबल रिफ्रैक्शन पोलराइज लाइट प्रोड्यूस करे नहीं अनपोलराइज प्रोड्यूस करे तापर फर्दर अदर ट्रीटमेंट रे सेटा ही जाए कौन पोलराइज्ड हुए तेणु जेकोसी अनिसोट्रोपिक मिनरल को नहीं तो आम कर पोलराइज ले किंतु ये कौन कर आमर प्लेन पोलराइज लाइट यूज करा जाए जे गोटे सिंगल प्लेन में वाइब्रेट करथवा दरकार बट ये जो दीटा रे बाहर दे आर वाइब्रेटिंग इन डिफरेंट प्लेन परपेंडिकुलर टू ईच अदर प्लेन वाइब्रेट करते बट ये जो रे एमर्ज कर दीटा रे एमर्ज कर आमको गोटे रे जदि कौन वे बाहर कर आम सी गोटे कौन प्लेन पोलराइज लाइट से कम सब कराए कौन पोलराइजेशन मेथड से दीटा रे जो जाए कौन कह जाए दीटा रे सब फास्ट रे स्लो रे कह जाए द टू रेज आर कॉल्ड एज मैं गोटे कह कौन फास्ट रे गोटे कह स्लो रे गोटे आम कह कौन फास्ट रे गोटे कह स्लो रे कहीं ऑर्डिनरी एक्सटर्नरी ओनली इन केस ऑफ यूनिएक्सेल कह जाए ऑर्डिनरी प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक अच्छे जोटा बायएक्सेल फिट होबन है तो फास्ट रे आउ स्लो रे दे विल वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर दे विल वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर तुम प्रोपागेशन भावियोनी दे विल वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो स्लो रे फास्ट रे दे विल वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर सो तले रे एंटर करछि कोन से अनिसोट्रोपिक मिनरल दीटा रे को स्प्लिट होउचंती गोटे रे फास्ट रे गोटे स्लो रे एंड वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर दिस इज कॉल्ड डबल रिफ्रैक्शन फेनोमेनन तो इन केस ऑफ यूनिएक्सल मिनरल देखिबा हमें ताले एठी यूनिएक्सल मिनरल देखिबा तमे तले रे एंटर करबा आधरे तो दीटा रे को स्प्लिट हबा गोटे वाइब्रेट करियो पैरेलल टू द सी एक्सिस गोटे कोड वाइब्रेट पैरेलल टू द सी एक्सिस गोटे वाइब्रेट पैरेलल टू A1 और A2 एक्सिस जेकोन गोटे एक्सिस दा वाइब्रेट करियो ता माने गोटे यदि एमिति वाइब्रेट कला आ गोटे एमती नले एमती जेकोन वे वाइब्रेट कर सो से केस रे जोटा सी एक्सिस को पैरेलल वाइब्रेट होउची बा जोटा A1 और A2 को वाइब्रेट होउची कोटा भी फास्ट और कोटा भी स्लो हो पारत कोटा भी फास्ट और कोटा भी स्लो हो पारत इन केस ऑफ यूनिएक्सेल केस रे तुम जो वाइब्रेशन डायरेक्शन अनुसार जो दीटा स्प्लिट वे रे तार ना दिया हला कौन गोटे ऑर्डिनरी रे गोटे होची एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे गोटे दिया हला ऑर्डिनरी रे आ गोटे दिया हला कौन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे ओनली केस ऑफ यूनिएक्सेल तो ऑर्डिनरी रे जोटा रहला सेटा वाइब्रेट करिवो इन द बासाल सेक्शन तो एटा केस ऑफ यूनिएक्सल मिनरल रे विल बी कॉल्ड एज ऑर्डिनरी रे एक्सटर्नल रे दीटा जो स्प्लिटेड रे हेले दे कॉल्ड एज ऑर्डिनरी रे एंड एक्सटर्नल रे so the ordinary ray it vibrates in the basal section and the extraordinary ray it vibrates in the principal section so principal section which is section parallel to the c axis basal section it is perpendicular to the c axis जदि आम ये देखा
So this will be our basal section. এটা আমার কই যাব, এটা হলো basal section, হলো basal section। তো এই সেকশন নে ভাইব্রেট করতে এমনি ভাইব্রেট করি পারে along A2 or along A1 সেই ডিরেকশনে সে ভাইব্রেট করি পারিবে। আর যদি আমি প্রিন্সিপাল সেকশন নবা তাহলে প্রিন্সিপাল সেকশনটা আইଯିବ প্যারালাল টু দা সি অ্যাক্সিস। तो ये प्रिंसिपल सेक्शन प्लस सी एक्सिस को पैरेलल करके जीवो एटा पैरेलल प्रिंसिपल सेक्शन। तो सेटी वाइब्रेट करिबा एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो ऑर्डिनरी रे इट वाइब्रेट्स पैरेलल टू द सी एक्सिस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे इट वाइब्रेट्स परपेंडिकुलर टू द सी एक्सिस। कोन कहि गेलो, ऑर्डिनरी रे वाइब्रेट्स इन द basal section, extraordinary vibrates in the principal section। तो ordinary vibrates perpendicular to c axis कोई परिबो, extraordinary vibrates parallel to the c axis और optic axis है ना। optic तुम्हारा ordinary it vibrates perpendicular to the c axis। basal section it is perpendicular to c axis, so we can say ordinary vibrates perpendicular to c axis। যদি extraordinary it vibrates parallel to the c axis और ऑप्टिक एक्सिस। तो जेहेतु ऑर्डिनरी रेटा बासाल सेक्शन में वाइब्रेट करछि, सो बासाल सेक्शनटा होछि इट हैज इक्वल डायमेंशन और आइसोट्रोपिक। सो ऑर्डिनरी रे हैव ए वेव फ्रंट ऑफ सर्कल। कोन आछो सर्कल आछो वेव फ्रंट, और वेव फ्रंट कोन आछो सर्कल आछो। सेमती एक्सटर्नल प्रिंसिपल सेक्शन में वाइब्रेट करछि तादरे A1 डायरेक्शन नले C नले A2 और C तीटा डायरेक्शन थिबो, आइदर A1 C थिबो नले A2 C थिबो, ए तीटा डायरेक्शन थिबो। तो से वाइब्रेट करछि अनइक्वली, तार हे जबो एलिप्स। तो वेव फ्रंट ऑफ ऑर्डिनरी रे इज सर्कल, एक्सटर्नल इज एलिप्स। But in case of extraordinary ray, sorry, in case of biaxial, there is no ordinary ray। तुम्हें faster ray कहि परिबो, slow ray कहि परिबो, कोन कहबो faster ray कहि परिबो, slow ray कहि परिबो। So both are extraordinary। सेठी सब ellipse ही देखेबे, vibration direction which समस्त unequal, those fast or slow ray all are called as extraordinary। से जगह तमे समस्त extraordinary कहबो, खाली in case of uniaxial तुम्हें ordinary ray कहबो है। So जोटा faster कोटा slower in case of ordinary or extraordinary, that is determined by optic sign। से का द्वारा डिटरमाइन करा जाय, ऑप्टिक साइन द्वारा डिटरमाइन करा। आ नहले कोटा फास्टर कोटा स्लोयर रे वाइब्रेशनल डायरेक्शन जाने के पहले हमें किछटा प्लेट यूज करंती, तो पोलराइजिंग फिल्म को जाय, कोन को जाय पोलराइजिंग फिल्म को जाय, जोटा हमें बेसी एलाबोरेटली पोलराइजेशन ही डिस्कस कर दबा, एबे दरकार नहीं। तो दीटा यूनिएक्सियल रे गोटे फास्टर रे गोटे स्लोअर रे हला। तो गोटे फास्टर रे गोटे स्लोअर रे रु कोटा ऑर्डिनरी कोटा एक्सटर्नरी बा केतेबेले ऑर्डिनरी फास्टर हबो केतेबेले एक्सटर्नरी फास्टर हबो, दैट इज डिटरमाइंड बाय ऑप्टिक साइन।